Okay, assalamu alaikum everyone. We are about to start. So today the plan is we are going to be doing these two papers, paper 4.1 of June 2021 and paper 4.3 of the same session. ये दो papers आज हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह. From paper 4.1, we are going to be doing these two questions, question number 5 and 7. ये दो questions कर रहे होंगे. These are relatively more complicated. And from paper 4, variant 3, we are going to be doing these 4 questions. Question 1 and 4 are like, okay, they're not very difficult, but they're slightly tricky or different. But then question number 5 and 7 are more difficult. ये 4 questions हम इस paper से कर रहे हैं इंशाल्लाह. ठीक है? So that's what we're going to be doing. Let's start from this paper first, paper 4.1. ठीक है, इससे start करें. So it's a mechanics paper. Remember what you have to take as the value of G here. G की value अपन 10 लेनी होती है. You got to make sure that you're showing all working और सारी working जो आपने show करनी है. At least 4 significant figures तक आपने सारी working अपनी show करनी. ठीक है? Okay. Let's begin. The first 4 questions are relatively easier. We are going to move on to we're going to start from question number 5 directly. इससे start करें. All right. So we have a particle that is moving in a straight line that starts from rest at a point A and comes instantaneously to rest at a point B. The acceleration of the particle at time t seconds after leaving A is a meters per second square, where A is equal to this. Find the value of t at the point B. ये आपको करना है. ठीक है? वालेकुम अस्सलाम फैजान हाशिम. So this is what we've got to do. अच्छा, so आपको क्या दिया हुआ है? Acceleration दी हुई है in terms of time. Please remember in these questions, whenever you got acceleration or velocity is a function of something, जब acceleration in terms of time होगा तब तो आप कभी भी constant acceleration formula नहीं लगा सकते. But in most cases where you've got velocity or displacement formulas as well, ज्यादातर आपके केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है. तो जब भी ये इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आए, do not use constant acceleration formula, use differentiation integration वाले concepts. Don't use constant acceleration formula. जो equation of motion होती है वो आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं use करनी है. Okay, because they don't work here. Okay, so we have to find the value of the t at point B. Now, what's point B? So we're basically given that the particle is starting from rest at a point A, and it comes again to rest at the point B. So point B के ऊपर we know the velocity is equal to 0. ठीक है? Acceleration का function दिया हुआ है हमें. हम क्या कर सकते हैं? हम इसको use करके velocity find कर सकते हैं. Now, how do you go from acceleration to velocity? आपको integrate करना पड़ता है, right? Acceleration को integrate करेंगे तो आपको velocity मिल जाएगी. Let's integrate this thing. Integrate करते हैं, we get 6 constant as it is. T की power increase कर दी by 1, so 1 over 2 plus 1, that becomes 3 over 2, and divide by that increased power, 3 over 2 से divide कर दिया. What's the integral of 2t? 2 as it is, t square over 2. That's the integral, but remember, whenever we integrate something और हम limits नहीं लगा रहे तो हमेशा plus c लगाते हैं. So we also have a plus c there. Okay, and then we'll have to think of a point that we can use to find the value of c. अच्छा, अभी हमारे पास ये आ गया. Let's take this 2 to the numerator here, and that's going to become, in fact, चलें वो कर लेते हैं पहले. 12 t raised to power 3 over 2 divided by 3. This 2 and 2 get cancelled. You've got t square plus c. अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें, ये 12 और 3 cancel हो जाएंगे. We're going to be left with 4 here, and now we need to find the value of c. How do you find that? You are also given that it's starting from rest at the point A. Start भी rest से कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जब time 0 है तो velocity 0 है. So when t equals 0, velocity equals 0. If you were to put all of that here, c की value 0 आ जाएगी, right? इसको आपने जरूर show करना है कि c की value 0 आप assume करो. Don't just ignore the c. आपने value लेके उसकी c की value 0 दिखानी है आपने कि c 0 आ रहा है. ठीक है? Now you've got this velocity function. Velocity function क्या आ गया? 4
t raised to power 3 over 2 minus t square. Now, since we are looking for the value of t at the point b, b के ऊपर क्या हो रहा है? b के ऊपर velocity 0, हम क्या करते हैं? Velocity की value को 0 input कर देते हैं. This is the velocity function. So what we can do is we can put v equals 0 here and then solve that equation. So we get 0 equals 4 t raised to power 3 over 2 minus t square aa raha hai aapke paas. What we can do is we can take t raised to power 3 over 2 common from this. T raised to power 3 over 2 common ले सकते हैं. 3 over 2 का क्या मतलब है? 3 over 2 is basically 1.5. So t raised to power 1.5 essentially हम common ले रहे हैं. What are we left with inside? 4 minus t raised to power 0.5, or we can say 1 over 2. Okay, so you might find it easier to think of it like this. आप ये कर सकते हैं. आप उसको इस तरह सोच लें. 3 over 2 power थी ना, so that's basically 1.5. So t raised to power 1.5 मैंने common ले लिया. If I'm taking 1.5 common, what am I left with there? I'm left with 0.5. Okay, and now either t raised to power 1.5 equals 0 or 4 minus t raised to power 0.5 equals 0. From the first one, I get t equals 0. वो तो हमें पता था कि जब starting point था वहाँ पे time 0 था, so that's already given. From the other one, we're going to get another value of t. So we have 4 equals t raised to power 0.5. We can square both sides, and that's going to give us t equals 16. That's what we were looking for. Time जब 16 है, तब आपका particle point b के ऊपर है. That's what we had to find. ठीक है? Okay, let's move on to the next one. Now, in the next part, it says, find the distance traveled from A to the point at which the acceleration of the particle is again 0. All right. Now, of course, start में तो acceleration 0 है, क्योंकि t equals 0 input करते हैं, यहाँ पे acceleration 0 आ जाती है. अब उसने क्या कहा है? Distance traveled find करना है आपने. कहाँ तक? Until the point when the acceleration is again 0. So सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें find करना है कि acceleration दोबारा 0 कब होती है. Okay. Acceleration का formula क्या है हमारे पास? Acceleration equals 60 raised to power 1 over 2 minus 2t. That's how acceleration is defined in this question. Okay. Now, first of all, we need to find when does acceleration become 0 again. So for that, we're going to input a equals 0. That's what we do here. We put a equals 0. उससे हमारे पास t की value आ जाएगी जब acceleration दोबारा 0 होती है. So we get something like this. What we can do is we can take 2t raised to power 1 over 2 common. It's again like before, 0.5 आपने common ले ली power. What are we left with inside? 3 minus t raised to power 0.5. Okay, now either 2t raised to power 1 over 2. इसको again मैं उस तरह से लिख लेता हूँ. It will make it easier for you to think about. 1 over 2 means 0.5. So what I've done is I've taken 0.5 common. अंदर भी मेरे पास 0.5 रह गया फिर इस t में से. ठीक है? So now I've got either 2t raised to power 0.5 equals 0 or 3 minus t raised to power 0.5 equals 0. From the first one, I get t equals 0 again. Again, we know कि start में acceleration 0 थी, तो वो एक तो वो value आ गई. And then we've got 3 equals t raised to power 0.5. We square both sides, and that gives us t equals 9. This is the point where the acceleration is again going to be 0. अब आपको क्या करना है? आपको distance traveled find करना है until this point. Distance traveled find करना है from time equals 0 to time equals 9. How do you find distance traveled? We already found the velocity equation before. ये हमने velocity equation निकाल ली थी पहले. उसको दोबारा से अगर आप integrate कर दोगे, you will get the distance formula, the displacement formula. In fact, displacement आ जाएगी आपके पास उससे. Let's integrate that again. So we had the velocity function. Velocity function was v equals 4t raised to power 1.5 minus t square. That was the velocity function. Now what we do is we integrate this thing again. And then since we're looking for distance traveled from time 0 to time 9, distance find करने के लिए हम limits use कर सकते हैं.
है ना। तो हम 0 से लेकर 9 तक इसमें लिमिट्स इनपुट कर देंगे and that's going to give us the distance traveled. You just have to be careful in such situations के दरमियान में आपकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही, वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही दरमियान में। वो हमने ऊपर फाइंड किया, हमें पता है कि वेलोसिटी 0 या तो टाइम इक्वल 0 पे होती है या उसके बाद टाइम इक्वल 16 पे होती है। दरमियान में कभी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही पार्टिकल की। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही फिर आप डायरेक्टली लिमिट्स लगा देते हैं, आपको कोई इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर डायरेक्शन चेंज हो फिर आप उसको मल्टीपल पार्ट्स में करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है आपको इसको। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, आप सिंपली क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें। What do we get from that? 4t raised to power 1.5 में 1 add किया, that gives us 2.5 divided by that increased power minus t cube over 3. This is the displacement. And now we input the limits on that. Limits कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक ये limits डाल देते हैं, and that's going to give us the displacement for this. बस directly इसके अंदर input कर दें, calculator से evaluate कर लें। 4 into 9 raised to power 2.5 divided by 2.5 minus 9 cube over 3. Subtract from that the case when you input 0. जब 0 input करेंगे तब तो दोनों terms वैसे 0 हो जाएंगी. And now you can just evaluate this. ठीक है, let's see what that turns out to be. 4 into 9 raised to power 2.5 divided by 2.5 minus 9 cube divided by 3, and that's giving me 145.8 meters. 145.8 meters. This is my distance traveled. ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई. It wasn't that difficult actually. Examiner report में लिखा हुआ था that a lot of candidates found this question to be challenging, but if your concepts are clear here, it wasn't really very difficult. ठीक है, so I hope that makes sense. Let's move on to the next one now. अच्छा, अब next try करते हैं. Question number 6 is easier. Let's try question number 7. This was again supposedly a difficult question on this paper. Let's try this. So it's a long statement, so you've got to read that first and try to make sense of the context. So what are we given? A slide in a playground descends at a constant angle of 30 degrees for 2.5 meters. Okay, so you've got the slide, and this is this inclined part of the slide, that is 2.5 meters. You can see that. It then has a horizontal section in the same vertical plane as the sloping section. A child of mass 35 kilograms, modeled as a particle P, starts from rest at the top of the slide. You can see that starting from this point, उसने क्या rest से start करता है. So that's an important thing. जो figure पे नहीं नजर आ रही, उसने क्या starts from rest. So that means the velocity at this point is going to be 0 meters per second. Okay. It slides straight down the sloping section. She then continues along the horizontal section until she comes to rest. There's no instantaneous change in speed when the child goes from the sloping section to the horizontal section. What that means is, जब वो child इस point पे पहुंचेगा और फिर एकदम वो हॉरिजॉन्टल पार्ट पे शिफ्ट करेगा, वो एकदम कोई वेलोसिटी में उसका कोई चेंज नहीं आएगा. जो उसके स्लोपिंग पार्ट के एंड पे उसकी वेलोसिटी होगी, वही हॉरिजॉन्टल पार्ट के स्टार्ट में वेलोसिटी होगी. फॉरन से कोई इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आ रही वेलोसिटी. दैट्स व्हाट इट मींस, द लास्ट लाइन हियर. ओके, अच्छा. Now the child experiences a resistance force on a horizontal section of the slide, and the work done against resistance force on the horizontal section of the slide is 250 joules per meter. Okay, so इसने work done बताया हुआ, so we can use an energy method for this if we want. So what are we given? Horizontal section के अंदर there is a resistance, and that resistance is, the work done against resistance is 250 joules per meter. Okay, now this is also important. 250 joules per meter. That's interesting. उसने आपको पूरा work done नहीं दिया हुआ, उसने दिया हुआ है work done per meter. तो वो distance traveled पे depend करेगा आपका कितना जो है वो work done है. So basically ये उसने एक तरह से आपको resistance की value दी हुई है.
because you see work done क्या होता है, that's force into distance, right? तो ये 250, इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको रीअरेंज कर लें तो क्या आता है, we get F equals W/D. W/D का क्या मतलब है, जूल्स पर मीटर. तो बेसिकली ये यूनिट जो दिया हुआ है यहाँ पे जूल्स पर मीटर, दैट्स बेसिकली यूनिट फॉर फोर्स. ये तो फोर्स का यूनिट है. तो ये एक्चुअली उसने आपको फोर्स की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस की फोर्स दी हुई है. दैट्स बेसिकली 250 न्यूटन. न्यूटन का अल्टरनेटिव यूनिट है. उसने कहा इसको वर्क हुआ है, बट इट्स एक्चुअली फोर्स. Force is being applied on the greatest line of slope. Where is that here? Shreya, ये कहाँ पे लिखा है? Or is that a general question that you're asking? Okay. अच्छा, जब उसने लिखा हो इस तरह से force applied on the line of greatest slope, उसका मतलब सिर्फ ये होता है जो sloping section है उसकी डायरेक्शन के अंदर उसके पैरेलल फोर्स लग रही है. तो यहाँ पे आपकी स्लोप कौन सी है, ये स्लोप है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट स्लोप दैट यू गॉट हियर. इसके पैरेलल फोर्स लग रही है. नाउ डिपेंड्स के वो ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, लेकिन इसके पैरेलल, राइट? दैट्स व्हाट इट मींस. Okay. Achha, now what are we being asked here? It's given that the sloping section of the slide is smooth. Find the speed of the child when the child reaches the bottom of the sloping section. Okay, so that's where we start from. Usne kaha hai the sloping section is smooth. Okay, so sloping section of the slide is smooth. यहाँ पे कोई resistance नहीं है. अच्छा, so we are right here at the starting point. और बाद में end पे हम नीचे आ जाते हैं. यहाँ पे bottom पे जाके आपने speed find करनी है. Now there are multiple ways of thinking about this. You could use acceleration formula if you wanted. You can use an energy method here as well. Conservation of energy. Why? Because अगर स्मूथ सरफेस है तो रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ड्राइविंग फोर्स पे वैसे कोई नहीं है. इट्स the particle is sort of released from rest, right? कोई ड्राइविंग फोर्स तो नहीं है, तो आप इसमें conservation of energy अप्लाई कर सकते हो if you want, right? That's one way to do it. या आप acceleration के थ्रू कर लें, that's your choice. तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं. Let's use acceleration यूज करेंगे तो क्या होएगा, we know the starting velocity क्या है, that is 0 meters per second. Okay, we know the distance traveled 2.5 meters. That's the distance traveled. That's s. ये दो चीजें पता है. What about acceleration? Since it's a smooth surface and there's no driving force, basically the only force acting on the object is the gravity, gravitational force, right? तो उसकी वजह से आपकी acceleration कितनी लगती है नीचे, downwards? Acceleration नीचे कितने लग रही होगी? It's going to be 10 meters per second square. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस 10 को रिजॉल्व कर लो, इस 10 का कंपोनेंट फाइंड कर लो along the plane. कि ये 10 का कितना कंपोनेंट along the plane लग रहा है, just find that directly. This is 30 degrees. If that's 30, we can say this is going to be 60. तो 10 का कंपोनेंट स्लोप की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, that's going to be 10 times cos of 60. That's the acceleration that we've got in this case. That's 10 cos 60. इसको आप evaluate करेंगे, cos 60 is 1/2, and that's going to turn out to be 5. Acceleration आपके पास आ गई 5. You've got these three values: acceleration, displacement, and initial velocity. What we can do is we can find the final velocity from this. कौन सा formula use कर सकते हैं? We can use 2as equals v square minus u square here. 2as equals v square minus u square. We know acceleration is 5. We know the displacement, that is 2.5. v square minus 0 square. Let's just evaluate this. हमारे पास आ गया 25 equals v square and v equals 5 meters per second. ये आपको speed मिल गई यहाँ पर. That's 5 meters per second. That's the velocity, or that's the speed of the particle of the child when it reaches the ground. ठीक है, ये इस point पे उसकी velocity आ गई. This is 5 meters per second. Okay.
Now, let's look at the next part. It says, find the distance that the child travels along the horizontal section of the slide before she comes to rest. Okay, now what's the distance traveled before she comes to rest? Now there is some resistance, but there's no driving force. आप क्या कर सकते हैं? Again, you can use an energy method if you want, और या फिर आप again वहाँ पे acceleration find कर सकते हैं इस direction के अंदर, because we know the value of resistance here. Resistance आपकी 250 है, उससे आप acceleration find करके उसको find कर सकते हैं, ठीक है? So there are multiple ways of doing this again. It might be hard to spot for many people कि ये force की बात हो रही है यहाँ पे joules per meter. So let's say आपको नहीं पता चला और आप इसको work वाले method से कर लें, वो कर सकते हैं. Daniel, you can also do that. You can also do that. That will give you the same result. आप 2.5 का component find कर लें अगर vertical, और उस पे फिर आप acceleration 10 use कर लें. लेकिन उससे जो आपकी velocity मिलेगी, वो velocity भी आपको, या speed जो मिलेगी, वो भी vertical speed मिलेगी आपको. Just keep that in mind. यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ कि हम स्पीड की बात कर, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो that's not really gonna make any difference. Can we just try? अगर मैं उसका कंपोनेंट फाइंड कर लूँ 2.5, and then if I were to resolve it in this direction, 2.5 into cos of 60 here, so change my angle. 2.5 cos 60, ये उसका component आ गया, that's 5/4. That's going to be your acceleration, ठीक है? acceleration आ गई, इसको multiply कर दें speed के साथ, distance traveled के साथ, distance traveled, इसने वो तो आ गया, distance traveled, acceleration is 10 into 2, yeah, so that gives you the same result. तो आप वो कर सकते हैं, but it's not a very good idea always, because फिर आपको बहुत सारी चीजें उस डायरेक्शन में करनी पड़ती हैं. अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आपके पास फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पे इतना मसला नहीं हुआ. अगर मल्टीपल फोर्सेस हों तो उसमें ज्यादा वर्किंग हो जाती है. It's better to just do it along the plane, but that is also possible. That is going to give you the same result as well. कर सकते हैं. अच्छा, now it says find the distance that the child travels along the horizontal section of the slide before she comes to rest. Okay. अब इसमें एनर्जी मेथड इज कुड बी वन पॉसिबिलिटी, वो यूज करेंगे तो क्या होएगा? एनर्जी मेथड यूज करेंगे तो क्या होएगा? वी हैव वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स दैट इक्वल्स change in potential energy plus the change in kinetic energy plus the work done against resistance. ठीक है? अच्छा, ड्राइविंग फोर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, दैट्स जीरो. वहां पे हम जीरो इनपुट कर देते हैं. What about the change in potential energy? Horizontal part में तो height change नहीं हो रही है, so there's no change in potential energy, right? So there's no change in potential energy. What about change in kinetic energy? We know the initial velocity, we know the final velocity. End पर जाके उसने rest पर आना है, so the final velocity is also zero. Okay? तो हम क्या करेंगे? Change in kinetic energy find कर लें. Half into m is 35 here, into v square minus u square. Final velocity is 0. Initial velocity is 5. So that's 0 square minus 5 square. That's the change in kinetic energy. What about the work done against resistance? उसने आपको बताया है it's 250 joules per meter. अगर उसने let's say ये d meters travel किया है, let's say the distance traveled is d, तो पूरा work done कितना हो जाएगा? That will be 250 times d. 250 times d, and now this is going to give you the distance traveled. यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. वो आप देख लें क्या आ जाती है. It's going to be -5 square. अच्छा, उसमें वहाँ पे लिख लेता हूँ पहले. Kinetic energy फाइंड कर लेते हैं. 35/2 into 25, and that's giving me 437.5. So I've got 437.5 equals 250 times d. And now that's going to give me the value of d, the distance traveled.
That turns out to be 1.75. That's the distance traveled. Okay, that was part A. Ahmed, we have done that complete paper, May, June 2021, paper 4, variant 2. If you try to search on the channel, you'll find solution of that complete paper. We did that a few days ago. Maybe somebody, Daniel, Farzan, Hashim, कोई link उसका यहाँ पे share कर दे chat में. We did that complete paper a few days ago. Okay. It is given that instead that the sloping section of the slide is rough and that the child comes to rest on the slide 1.05 meters after she reaches the horizontal section. Okay. Now it says it's given instead that the sloping section is rough. Now, what we did in part A is no longer relevant. Keep that in mind. So the velocity हमने find की थी पहले, that's not relevant anymore. वो सब कुछ change हो गया. अब दोबारा से calculations करनी है. ठीक है? वो पहले वाला जो हमने किया था, that's no longer applicable. Okay. Now it says the slope is rough and that the child comes to rest on the slide 1.05 meters after she reaches the horizontal section. Find the coefficient of friction between the child and the sloping section of the slide. Now that looks a bit complicated. Let's think about it. What I'm going to do is I'm going to just copy this figure here again. आप जब एग्जाम में कर रहे होगे आप क्या करोगे ये जो मैंने ऊपर सारी एनोटेशन की है फिगर के ऊपर you will be doing all of this using a lead pencil या पेंसिल से करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए उसको इरेज कर देंगे ठीक है ताकि आपको बार बार ये ना बनानी पड़े फिगर इट विल सेव योर टाइम मैकेनिक्स में कभी कभी टाइम का मसला हो जाता है so I've got this figure I'm just copying that figure here again. Now it says the sloping section is rough. That means there's going to be friction there. And the child comes to rest 1.05 meters after being on the horizontal ground. So let's say यहाँ पे आके वो rest पर आ गया. This distance on the horizontal section is going to be 1.05 meters. ठीक है अच्छा देखिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन में तो उसने जो हमें दी हुई थी रेजिस्टेंस वो तो अभी भी वही है राइट रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में थी वो तो अभी भी वही है बिकॉज वो क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखी हुई थी वो पार्ट ए के अंदर नहीं लिखी थी वो तो मेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखी हुई थी सो दैट्स स्टिल वैलिड जो क्वेश्चन के नंबर क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट रेलिवेंट जो मेन सेक्शन में उसने सारा लिखा हुआ है दैट्स स्टिल रेलिवेंट सो वो जो resistance force है horizontal section में that is still 250 joules per meter. So that's still relevant. Okay, keep that in mind. What we've got to do is we've got to find the coefficient of friction between the child and the sloping section. Achha, what we can do is we can actually move, we can go in the reverse direction. हम पहले ये horizontal section में देख लेते हैं उसको यूज करके हम क्या करते हैं हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 meters per second होगी हॉरिजॉन्टल पार्ट के अंदर we also know the distance traveled ये भी हमें पता है we also know the resistance इसके ऊपर forces क्या act कर रही हैं so जो भी आपका particle है let's say this is the particle P we know the force that is acting along the plane on this particle राइट साइड पे मूव कर रहा है रेजिस्टेंस लग रही है उसके ऊपर सिर्फ और कोई भी फोर्स नहीं है और वो रेजिस्टेंस कितनी है it's 250 joules per meter. We can find the value of force from that. Again, इसमें भी आप क्या कर सकते हो? You can use the energy method if you want. या आप acceleration वाला use कर सकते हो. Again, that's your choice. चलिए, let's use the energy method here as well. यहाँ पे भी वो use करके हम क्या करना चाहते हैं? हम इस point के ऊपर, इस starting point के ऊपर अपनी velocity find करना चाहते हैं पहले, right? That's the first thing that we want to do. I'm going to mark these points something. Let's say this point is A, this point is B, and this point is C. I'm talking about the section BC first. I'm dealing with this section first. Section BC. अच्छा, section BC में क्या है? Is there any driving force? There's no driving force still. Let's write that identity down. Work done by driving force, that's equal to change in kinetic energy plus the change in potential energy plus the work done against resistance. Okay? Acha.
What's the driving force? There's no driving force. Change in kinetic energy. Initial velocity हमें नहीं पता, वही हम find करना चाह रहे हैं. Let's call this something. Let's call this initial velocity u. या हम बाद वाली को 0 लिख देते हैं सिर्फ, इसका हम v कह देते हैं, ये v हमें find करना है. This is the initial velocity. अच्छा, उससे confusion भी हो जाएगी. Let's leave it as u for now. Change in kinetic energy, half into mass. Mass is 35. Right? Final velocity is 0. Initial velocity is unknown. We don't know that. वो हमें find करनी. ये आपकी change in kinetic energy होगी. What about the change in potential energy? There's no change in potential energy because we're on horizontal ground. Change in potential energy is 0. What about the work done against resistance? Again, we know the value of the resistance per meter. That's 250 joules. Distance traveled कितना है? 1.05. So that's going to be 250 into 1.05. And that's going to give you the velocity at the point B. ये हमारे पास यहाँ पे velocity आ जाएगी. Let's figure that out. It's going to give me 1/2 into 35 into u square. If I take that u square to the left side. On the right side, I've got 250 into 1.05. That gives me 262.5. Okay, let's find u square now. That's this multiplied by 2 divided by 35. That's 15. U मेरे पास आ गया square root of 15. You can leave it in exact form if you want. या फिर आप इसको अगर decimals पे लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं. This is going to be 3.87, लेकिन ज़्यादा accuracy use करनी है पर 3.8730. Okay, that's what I have. That's the speed at the point B. ये B के ऊपर speed आ गई. ठीक है. Now what do we do next? Now we think about the region or the slope that we've got AB. वो वाला हम part consider करते हैं, AB part, और उसमें देखते हैं हमारे पास अब कौन कौन सी forces act कर रही हैं या क्या क्या हमारे पास information वहाँ पे given AB part में. We know the final velocity now. Final velocity अब हमें पता चल गई है. B point के ऊपर AB हम section अगर देखें, AB section में हमें पता है कि B के ऊपर velocity कितनी है. We also know the initial velocity. So it started from rest. हमें पता है initial velocity 0 थी. And we know the velocity at the point B, that is now given to be square root of 15 meters per second. ये भी हमें पता चल गया. Okay. अच्छा. What else do we know? We can find हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? Again, if you want, you can use the energy method again. वो भी use कर सकते हैं. Or if you want, you can use Newton's second law. हमने energy method पहले use कर लिया. Let's actually try the other method for this part. Okay, वो try करके देखते हैं. How would you do that here? Okay, यहाँ पे आपको coefficient of friction भी चाहिए ना. उसके लिए it's actually going to be quicker to use Newton's second law because आपको पता है कि friction is going to be equal to mu r. तो हमारे पास वही रिलेशनशिप है म्यू का, तो वो हमारे पास वहां से आ सकती है किसी तरह से. लेट्स रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. हम कहते हैं ये पार्टिकल पी है. पी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट. द फोर्सेस दैट वी गॉट एक्टिंग ऑन पी, दे आर weight of the particle. In fact, वो पी तो ऊपर बना हुआ है, उसी पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं. वी गॉट द weight of the particle. Weight कितना है इसका? It's acting vertically downwards. That's 350 Newton. Okay. What other forces do we have here? We're going to have reaction force. Reaction हमेशा कहाँ पे लगता है? Perpendicular to the surface. The reaction is going to be acting in this direction. This is your reaction force, perpendicular to the surface. एक ये force लग रही है. What else do we have? We've got friction, क्योंकि particle नीचे move कर रहा है. Friction कहाँ पे लगेगी? Friction उसका oppose करेगी. Friction is going to be acting in this direction. Do we have any other forces now?
there is no other force. हमने weight represent कर लिया, हमने friction represent कर ली, reaction represent कर लिया. There are no other forces that are acting at this point A. हमने इसको A mark किया था, that A here now. इसके ऊपर और कोई force नहीं लगी. अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, resolve कर लेंगे forces को. R already plane के perpendicular है, friction already plane के parallel है. We don't need to do anything to them. 350 vertically downwards लग रहा है, 350 को resolve कर लेते हैं. How do we do that? आपको पता है कि 3 जो weight होता है उसका component along the plane हमेशा क्या होता है, weight into sine of this angle. आप directly उसको लिख सकते हो if you know that fact. Otherwise you can think of it logically. If this angle is 30, this is going to be 60. आप इसको 350 cos 60 बना सकते हो using that if you want. या आप ये भी कर सकते हो कि if that angle is 60, this angle is going to be 30. तो आप कहो कि component that is adjacent to the angle, that's going to be 350 cos 30. और दूसरी साइड वाला एंगल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस साइड वाला, that's going to be 350 sin 30. जो आपको याद होना चाहिए कि weight का component along an inclined plane हमेशा क्या होता है, weight into sine of the angle of the plane. ठीक है, ये हमारे पास आ गया weight का component in this direction. Now we've got all the forces resolved. We've got some forces that are acting parallel to the surface. एक ये force है, एक ये force है. We've got some forces that are acting perpendicular to the surface. We've got this force R and we've got this force 350 cos 30. ये दो forces हैं हमारे पास दोनों sides के ऊपर. Now let's think about it. Perpendicular तो कोई movement नहीं है इस direction में, तो आपकी कोई movement नहीं हो रही है, right? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं. एक हमारे पास आ गई perpendicular forces, एक हमारे पास आ जाएंगी parallel forces. So basically perpendicular क्या मतलब है, I'm saying perpendicular to the surface. We've got those forces and we've got parallel to surface forces. Or you could also think of it that way. Some of you might have done that way as well. कि ये जो force है इसको हम कहते हैं right side वाली force है, जो नीचे की तो यहाँ पे right side पे लग रही है, इसको हम कहते हैं ये left side वाली force है. इसको हम कहते हैं ये upwards force है, इसको हम कहते हैं downwards force. Right? You could also think of it like that. Now, these forces are supposed to be equal. Why? Because perpendicular to surface तो कोई भी आपकी movement नहीं है, movement तो along the plane है. So R की value क्या हो जाएगी? R is supposed to be 350 cos 30. ये evaluate कर लें, देख लें आपके पास क्या आ जाता है. Value of R 350 cos 30. This turns out to be 303.11. Okay, this is the value of R. What about parallel to surface now? Horizontally हमारे पास parallel to surface कौन सी forces लग रही हैं? What's the forward force? What's the forward force here? नीचे को move कर रहा है, the forward force is 350. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब movement हो रही होती है हम क्या करते हैं, हम use कर लेते हैं resultant force equals mass into acceleration, or we can say the forward force minus the backward force, that equals mass into acceleration. Forward force 350 sin 30 है, 350 sin 30. What about the backward force? The backward force is this friction, and that equals mass, that's 35, into acceleration. ये आपके पास ये relationship आ गया. Okay, now 350 sin 30, that's going to be 350 into 1/2. Friction की value क्या होगी, जब movement हो रही होती है friction अपनी maximum value के ऊपर होती है, यानी friction equals mu r. Friction की जगह पे mu r डाल दें, and then you've got 35 times A. Now you know the value of R here, वो तो आपको पता है. What we do not know is the value of acceleration. अब हमें क्या करना पड़ेगा, acceleration figure out करनी पड़ेगी. Acceleration की क्या value है? How do you figure that out? Acceleration कैसे find करें? Now we've got some information for that as well. क्या information है? We know u equals 0. ठीक है? We know the final velocity at the point B, and we know the distance traveled. A से लेकर B तक हम AB वाले पार्ट की बात करें, इस पार्ट के अंदर हमें पता है
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? स्क्वायर रूट ऑफ 15, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना था? 2.5. What we can do is we can actually use this information to find the value of a. वो a फिर हम जाके यहाँ पे input कर देंगे and we should be able to find the value of mu from there. Let's figure out the value of a here. कौन सी equation लग सकती है? We can use 2as equals v square minus u square, and that's going to give us the value of a. 2a into 2.5 equals square root of 15 ka whole square minus 0 square, and that's going to give me a equals 3 here. I think 15 divided by 5 होगा यहाँ पे, right? So that's going to be 3. Acceleration यहाँ पे मेरे पास आ गई 3. So I have the value of r, I've got the value of a. ये दोनों जाके यहाँ पे input कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास म्यू आ जाएगा 350/2. ये क्या होता है? This is going to be 175 minus mu into 303.11. That equals 35 into 3, and that's going to give you the value of mu. इसको solve कर लें, you'll get the value of mu from this. You can try this. 175 minus 35 into 3 divided by 303.11, and it's giving me 0.2309. Mu turns out to be 0.2309, or you can just write 0.231. That's what we were looking for. That's the value of the coefficient of friction. All right. Any problems with this? Any questions on this? Is that clear to everyone? That was question number 7 from this paper. This part was slightly tricky. I hope that makes sense. इसमें दोनों मेथड्स आप लगा सकते थे, दोनों पार्ट्स के अंदर आप फोर्सेस वाले मेथड्स भी लगा सकते थे, एनर्जी से भी कर सकते थे. बोथ आर गोइंग टू बी वैलिड हियर. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप RF इक्वल्स m में भी लगा सकते हो, और आप एनर्जी वाला तो हमेशा यूज कर ही सकते हो. वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना भी हो तब भी यूज कर सकते हैं. इसमें दोनों मेथड्स अप्लाई हो सकते थे. ओके, सो दैट्स the value of mu. ये मैं find करना था. These were the 2 questions that I wanted to do from this paper, May-June 2021, paper 4, variant 1. Let's move on to 4.3 now. ठीक है, 4.2 हमने पहले complete paper किया था. We did that on 19th of April. Let's try a few questions from this paper now. May-June 2021, paper 4, variant 3. Okay, इससे हमने ये 4 questions करने हैं. Questions 1, 4, 5, and 7. These are the 4 questions that we're going to do from this paper now. All right. Let's start from this one. A particle P of mass 0.5 kilograms and Q of mass 0.5 kilograms, 0.4 and 0.5 are free to move on a smooth horizontal plane. Okay, so P has this mass, Q has this mass. P and Q are moving directly towards each other with speeds 2.5 and 1.5 respectively. After P and Q collide, the speed of Q is twice the speed of P. Find the 2 possible values of the speed of P after the collision. अच्छा, यहाँ पे लिखा है उसने 2 possible values of the speed. Now, that's the only tricky part in this question. Otherwise, the simple conservation of momentum है. लेकिन 2 possible values कैसे आएंगी? That's what you've got to think about. Now, let's try to visualize the situation. That's going to help us think about it. Before the particles are colliding, what's actually happening? So before the particles are colliding, क्या हो सकता है हमारे पास? क्या situation है essentially? Let's say P यहाँ से आ रहा है, it's moving towards this side. Q यहाँ से आ रहा है, it's moving towards the left side. They're moving towards each other. Okay, they're moving directly towards each other. That means P अगर इस right पे move कर रहा है तो Q left पे move कर रहा है. P की speed कितनी है? That's 2.5 meters per second. What about Q? Q is moving at 1.5 meters per second towards the left side. We've got their masses given. We यहाँ पे लिख लेते हैं 0.4 kilograms and 0.5 kilograms. That's what is happening before collision. Now, what about after collision? Collision के बाद क्या होएगा? अब collision के बाद क्या, उसने हमें speed तो बता दी है कि अच्छा speed of Q is twice the speed of P. Okay, that's what we're given.
बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, किस साइड पे मूव करेंगे? वी डोंट नो दैट, राइट? डायरेक्शन का हमें नहीं पता। तो बेसिकली ये जो 2 पॉसिबल वैल्यूज ने मांगी है आपसे, वो आपको 2 पॉसिबल केसेस से मिलेंगे कि अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, राइट? कि डायरेक्शन क्या होगी आफ्टर कोलिजन। नाउ हाउ डू वी फिगर आउट द डायरेक्शन in which they are moving? एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि they both change directions, दोनों opposite sides move कर, right? That's always one possibility, that they both start moving in opposite directions, ठीक है? So after collision एक possible case ये हो सकता है कि हम कहें P लेफ्ट में मूव करना शुरू कर दे और Q जो है वो राइट पे मूव करना शुरू कर दे, right? This is one possibility. ये तो नहीं हो सकता कि Q लेफ्ट पे चला जाए P राइट पे चला जाए, ये तो नहीं हो सकता कि Q लेफ्ट पे चला जाए P राइट पे चला जाए। That's not possible because they are colliding with each other. Q P के थ्रू गुजर के ऑपोजिट साइड पे नहीं जा सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, Q हैज टू बी मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, P हैज टू बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। एक ये पॉसिबल केस हमारे पास हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? They can either move both move towards the right or they can both move towards the left. अब इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है? Can they both move towards the left or can they both move towards the right? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इन दोनों के मोमेंटम से। इनिशियल मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा वो दूसरे की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, right? So let me explain what I mean by that. What is the momentum of the particle P? Mass into velocity, that's 0.4 into 2.5. What's that? That's going to be 1 in this direction, right side के ऊपर। Q का momentum कितना है? 0.5 into 1.5 and that gives me 0.75. Q का momentum towards the left side कितना है? That is 0.75. P का momentum ज्यादा है, Q का momentum कम है, तो P जो है वो Q की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, Q P की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। ये नहीं हो सकता कि Q आके हिट करे और खुद भी लेफ्ट पे मूव करना शुरू कर दे और P को भी लेफ्ट मूव करना शुरू कर दे, बिकॉज P का मोमेंटम Q का मोमेंटम कम है, ठीक है? P का मोमेंटम क्योंकि ज्यादा है, तो P ये हो सकता है कि कोलिजन के बाद P भी राइट पे मूव करना शुरू कर दे और Q भी राइट पे मूव करना शुरू कर दे। दिस इज अनदर पॉसिबल केस दैट वी गॉट। ये 2 केसेस हमारे पास आ गए। We got case 1 for after collision and we got case 2 for after collision, ठीक है? अब दोनों के अंदर क्या है? उसने कहा है कि जो वेलोसिटीज हैं, Q की वेलोसिटी जो है दैट इज ट्वाइस दिस, Q की स्पीड जो है दैट्स ट्वाइस द स्पीड ऑफ P, ओके? सो इफ वी से द स्पीड ऑफ P इज V, इसको हम V से रिप्रेजेंट कर दें, तो Q की कितनी होगी? दैट्स गोइंग टू बी 2V, ठीक है? मैं फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ P फाइंड करनी है ना, उसको हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर ये V है तो ये 2V होगी। दूसरे केस में क्या है? अगर P अगेन V है तो Q कितना है? दैट इज 2V। ये दो हमारे पास आ गए। अब कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दें। क्या करेंगे? मोमेंटम बिफोर दैट इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर, दोनों केसेस के अंदर, ठीक है? सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग। मोमेंटम बिफोर कोलिजन should equal momentum after collision. That's what should happen for both of them, दोनों केसेस के अंदर। अच्छा, फर्स्ट केस में अप्लाई करते हैं। what about the momentum before? Now we have to consider one direction as positive. Let's say मैं right side positive ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, before collision देख लें क्या हो सकता है? mass into velocity होता है ना momentum आपका, so mass is 0.4, velocity is 2.5, that is for P before collision, plus mass of Q, that's 0.5 into velocity of Q। अब ये क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी हम क्या कहेंगे? -1.5। दैट इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
आफ्टर कोलिजन क्या होता है, P is moving towards the left side, इसका मास कितना था 0.4, क्योंकि अब लेफ्ट पे मूव कर रहा है उसको हम कहेंगे -v. Q is moving towards the right side, that's going to be 0.5 times 2v. That's the first equation. We'll get something from this, 1 minus 0.75, that equals minus 0.4v plus v. That gives me 0.6v equals 0.25, and that's going to give me a value for v, 0.25 divided by 0.6. Let's see what that turns out to be. 0.25 divided by 6, that's 1 over 24 or 0.1, no, 0.041667. इसको आपने अगर राउंड ऑफ करना है 6 नहीं रखना है एंड पे, राउंड ऑफ करके it's going to become 7, and this is 3 significant figures. अगर आप इससे कम accuracy रखेंगे you will lose marks. If you write 0.04 or 0.042, that's going to be incorrect, आपको आंसर का मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है? So don't lose marks like this. आपने at least 3 significant figures लिखने हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं उससे, कम नहीं लिखना है, ठीक है? So that's one possible value of the velocity of P. Let's make the other equation as well. दूसरे केस में आपके पास क्या बन जाएगा, मोमेंटम बिफोर तो वही होएगा, मोमेंटम बिफोर तो वही है, that's 0.4 into 2.5 plus 0.5 into minus 1.5. After क्या हो जाएगा, they are both moving towards the right side, so we say 0.4v plus 0.5 into 2v. Okay, that's the momentum that you're getting from this after collision. Let's simplify this. We get 1 minus 0.75, and on the right side I've got 1.4v. So 0.25 equals 1.4v, and that's going to give me another value for velocity. ठीक है, ये figure out कर लेते हैं, speed की value 0.25 divided by 1.4, that gives me 0.17857. If I were to round it off, I'll write 0.179 here. ठीक है, राउंड ऑफ सही तरह से करना है. यहाँ पे पहले वाले केस के अंदर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही थी, the actual value was something like this, 0.0416667. इसको राउंड ऑफ करके लिखा तो it would be 0.0417. These are the two possible values of v that you were looking for. Okay, let's move on. Next we want to do question number 2 is relatively easier, 3 is easier. Let's try question number 4. इसका part 2 जो है थोड़ा सा है, part 1 is relatively straightforward. Let's try that. Question number 4. Part A, show that u equals 20. अच्छा नहीं, पहले question तो पढ़ लें. A particle is projected vertically upwards with speed u from a point on horizontal ground. अच्छा, so we have a particle that is projected vertically upwards. It's always going to be helpful if you can draw a rough figure. This is the particle that's projected, u meters per second. ठीक है. After 2 seconds, the height of the particle above the ground is 24 meters. अच्छा, it's pretty straightforward. इसने कहा है initial velocity u है, एक पॉइंट पे जाके हाइट कितनी हो जाती है, it's 24 meters. टाइम कितना लगा यहाँ पे पहुंचने में, 2 seconds. एक्सेलरेशन कितनी है, it's free fall, right? अब इसमें आपको डायरेक्शन आपने ख्याल रखना है. If you're taking upwards direction is positive, एक्सेलरेशन तो नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लेंगे, that will be -10. You've got the values, you just input those values in one of the equations of motion. You've got s equals 24, you know time equals 2, and you know acceleration equals -10. आपको u find करना है. What equation can we use here? We can use s equals ut plus half at square. That's what connects these 4 things. Let's use that. S is 24, u into 2 plus half into -10.
into t square. ठीक है? Now that gives me 5t square minus 2u plus 24 equals 0. ये equation आ गई. You can solve this equation. Sorry, 2t. What did I do here? It should be मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे. I'm sorry about that. Let me just so मैंने t की वैल्यू वहाँ पे इनपुट की थी. Let me go back there. t यहाँ पे क्या होना चाहिए? t should be 2. So 2 का square. So that's actually a linear equation. I was making it complicated. 24 equals 2u minus 5 into 4. That's 20. And that's going to give me the value of u here. 2u equals 44. And u equals 22. That's what we wanted to show. ठीक है, u की value 22 आ गई. ठीक है. Walaikum assalam, Saman, we've done a few papers on S1. We're done with October, November papers, and we're done with so we're done with both May, June, and October, November papers. But we do S1 here only, not S2. S1 के आप देखें channel पे पढ़े हुए May, June 2021 and also October, November 2021. ये दोनों sessions के दो वेरिएंट्स हमने पूरे कंप्लीट किए हैं और बाकी 4 वेरिएंट्स हमने जो मुश्किल वाले क्वेश्चन थे वो सारे अटेम्प्ट किए हैं. Okay, let's look at part B now. The height of the particle above the ground is more than h meters for a period of 3.6 seconds. Okay, find the value of h using this. Now, let's think about this. हमें पता चल गया अब initial velocity पता चल गया. So the particle is projected from here at a speed of 22 meters per second. So initial velocity we know. इस पे उसने project किया इसको. U equals 22 meters per second. Acceleration का भी हमें पता है अगर हम upwards direction positive ले रहे हैं. So it's actually helpful to mark it explicitly. Like आपको याद रहे आपने ऊपर वाली side positive ली हुई है. तो acceleration क्या होगी इस केस के अंदर? That will be -10. What other information do we need? So बाकी overall information नहीं चाहिए हमें कोई. Height of the particle above the ground is more than h meters for a period of 3.6 seconds. Okay. अब देखिए particle ऊपर आपने project किया है. At some point, the height is going to become h meters. Let's say this is that point. इस point पे जाके आपकी height जो है वो h meters हो रही है. Side पे mark कर देता हूँ. This is, let's say, h meters. So what's happening? The particle is going up here like this. ऊपर जा रहा है. किसी point पे, of course, अपनी maximum point पे पहुंच जाएगा. And then it's going to come down. फिर वो नीचे आ जाएगा इस तरह से. जाके ground को दोबारा hit करेगा. That's the whole journey of the particle. ठीक है? Okay, so that's what's happening to the particle, and we also know कि maximum point पे क्या होता है? Maximum point पे जाके उसकी velocity 0 हो जाती है. So that's also another piece of information that we've got. अब उसने क्या कहा है? The particle above the ground, the height of the particle above the ground is more than h meters for a period of 3.6 seconds. What that means is, for this part of the journey, we've got the total time taken. वो कितना है? That is 3.6 seconds. 3.6 seconds लगे हैं इस yellow part के अंदर. Yellow part को कितना time लगा? 3.6 seconds. That's what we know. We've got to find the value of h. ये h find करना. Now, how do we think about this? जब भी इस तरह की problems होती हैं, हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि हम इसको divide कर लेते हैं multiple portions में. ठीक है? So we say this is point A, and then this is point B. It's easier to do the working after that. This is A, this is B, this is C. मैंने 3 points mark कर लिए. अब इसको हम step by step देखेंगे. A, B portion में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है. Right, so let's think of it step by step. अच्छा, A, B portion में हमें क्या पता है? Do we have any useful information for the part A, B? हमारे पास ज़्यादा information नहीं है A, B के लिए. We only know कि
इनिशियल वेलोसिटी 22 है, हाइट h है, एक्सेलरेशन -10 है। हमें सिर्फ दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, -10 है और ये 22 है। दो चीजों से आप कुछ फाइंड कर नहीं सकते। बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? इसमें हमें क्या पता है? इसमें हमें पता है कि टाइम कितना लगा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं होगी, एक्सेलरेशन होगी और टाइम होगा। या सो फॉर दिस पार्ट वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स थिंक अबाउट दिस। सो पार्ट बी सी देखें। पार्ट बी सी अगर आप देखें, बी से लेकर जब सी जा रहे हैं, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू कंसीडर दिस पार्ट जब वो ऊपर जा रहा है। बी से सी पार्ट देखें, इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। बी से सी पे जब वो जा रहा है, व्हाट डू वी नो अबाउट दिस पार्ट? वी नो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी मैक्सिमम पॉइंट पे जाके। बी से सी पार्ट कंसीडर करें, रिमेंबर फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। Do we know acceleration? Acceleration the constant throughout, that is -10. Do we know the time taken for this part B से लेकर C तक? ये जो पूरा येलो पार्ट है उसके अंदर हमें कितना टाइम लगा है? 3.6 सेकेंड्स। पूरा येलो पार्ट के अंदर कितना टाइम लगा है? 3.6 सेकेंड्स। तो उसका हाफ कर लें अगर, B से C जाने में कितना लगा होगा? It's going to be half of 3.6 seconds. That's going to be 1.8. ओके, मैं आधा पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ ना उस जर्नी का। बी से सी और फिर सी से बी टोटल आने पे कितना लगा था? 3.6। तो बी से सी जाने पे कितना लगा? दैट्स गोइंग टू बी 1.8 सेकंड्स। मेरे पास ये तीन चीजें आ गई। व्हाट आई कैन डू नाउ इज आई कैन find the time taken. No, time is already given. I can find the velocity at the point B. Now that's going to be helpful. मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। लेट्स कॉल दिस पॉइंट u, दिस वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ मैं बी सी पार्ट के लिए। ठीक है, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे? I'm considering B to C part of the journey. I've got this information U, A and T. U find कर सकते हैं हम यहाँ से। कैसे करेंगे? We know V equals U plus AT. V is 0, A U is unknown, A is -10, time taken is 1.8. We find the initial velocity from here. The initial velocity turns out to be 18 meters per second. ये आपकी वेलोसिटी आ गई एट द पॉइंट बी। ठीक है, बी के ऊपर वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास ए बी पार्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? फॉर द ए बी पार्ट नाउ, ए टू बी पार्ट, वी गॉट एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। ए से बी तक वी नो इनिशियल स्पीड क्या थी? 22। वी नो द फाइनल स्पीड नाउ। बी पॉइंट के ऊपर हमें स्पीड पता चल गई। अब दैट्स आवर फाइनल स्पीड फॉर दिस पार्ट ऑफ द जर्नी, ए से लेकर बी तक, दैट्स 18। Do we know the acceleration? That's still -10. We can find the distance traveled from A to B. वो आपका h होएगा, इसको s की जगह पे हम h डाल देते हैं। इनको कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है आप? u, v, a और s को। Again 2as equals v square minus u square. We can use that. 2as equals v square minus u square. Values input कर दें। 2 into -10. S is h and then v is 18. U is 22. Just solve this to find the value of h from this. 18 squared minus 22 squared divided by 20. That's going to give me 8. The value of h is 8 meters. That's what we wanted to find. ठीक है? All right. Let me read that. Yeah, Shreya, I think that's also fine. What you are suggesting, that would also work. I think this is slightly quicker what I've done here. दो इक्वेशन बना के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। That's also going to work. वो भी हो, that also works. That's also possible, yes. But that might be slightly longer. All right.
Let's move on to the next one now. Question number 5. Let's look at this now. Now we've got a car of mass 1400 kilograms that is towing a trailer of mass 500 kilograms down a straight hill inclined at an angle of 5 degrees to the horizontal. Again, it's always helpful in situations like these to draw a diagram. A diagram bana le, that's going to help you think. 5 degrees angle है आपके पास. So you can just draw an inclined plane like this at an angle of 5 degrees. Okay. Now, a car of mass 1400 kilograms is towing a trailer of mass 500 kilograms. There's a car and there's a trailer. Car tow kar rahi hai usko, trailer ko. Are they moving down? Okay, so they're moving down the hill. So basically, car yahan pe niche hoegi because that's towing the trailer. Trailer aapke paas upar hoega. They're connected by a light, rigid tow bar. Now, it's not a string. Keep that in mind. It's a rigid tow bar. Rigid tow bar mein you have to be aware कि आपकी टेंशन के बजाय थ्रस्ट भी हो सकती है, राइट? थ्रस्ट भी हो सकती है. फॉर आवर पर्पसेस जस्ट नो कि जो आप टेंशन की वैल्यू कंसिडर करेंगे ना, वो नेगेटिव आ सकती है इसमें, बिकॉज जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो पुश भी कर सकते हैं, राइट? वो पुश भी कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग तो हमेशा पुल करती है ना, तो अगर हम टेंशन की डायरेक्शन स्ट्रिंग वाली लेंगे तो कभी कभी हो सकता है इस रिजिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपकी थ्रस्ट आ रही है, उसका मतलब ये होगा टेंशन की वैल्यू आपको बस नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पुश कर रहा होगा. दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट कि टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, एंड दैट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. अच्छा, in such cases जहाँ पे rigid objects हों. At the top of the hill, the speed of the car and trailer is 20 meters per second. At the bottom of the hill, their speed is 30 meters per second. It's given that as the car and trailer descend the hill, the engine of the car does 150,000 joules of work. So that's the work done by the driving force. And there are no resistance forces. Resistance to koi bhi nahi hai. Find the length of the hill. Length of the hill aapko figure out karni hai. How do we think about this? Resistance to koi bhi nahi hai. Aap isko dobara se usi tarah se you can think about forces of motion, equations of motion. वो अब उस तरह कर सकते हैं because you know. अच्छा नहीं, वो नहीं यूज कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते. इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकते. कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मूला है. व्हाई? बिकॉज यू सी इट सेज ड्राइविंग फोर्स है ना यहाँ पे. सो कार डज 150,000 जूल्स ऑफ वर्क. अब हमें ये नहीं पता कि ये इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कांस्टेंट है कि नहीं है. That's not given in the question. You're not given that whether the driving force is constant or not. You're not sure about that. You're not sure about that. Since we are not sure about that, driving force अगर constant नहीं है, उसका मतलब है जरूरी नहीं है कि acceleration भी constant हो. ठीक है, तो अगर acceleration constant नहीं है तो constant acceleration वाले formula हम apply नहीं कर सकते हैं. तो हमें क्या use करना पड़ेगा? हमें energy method ही use करना पड़ेगा. Now, how do we use that? Let's think about it. What we can actually do is we can just think of it as a whole system, because यहाँ पे तो वो दोनों connected ही हैं throughout. तो हम पूरे को देखें, अगर इस पूरे दोनों objects को कितने इनके masses हैं. We've got 1400 kilogram mass of the car, 500 kilograms mass of the trailer. At the top, we know their speed is 20. At the bottom, their speed is 30. And we know the work done by the driving force. ये हमें एक चीज पता है यहाँ पे. The problem is we do not know the height of this. Height हमें नहीं पता. अच्छा, हमें height तो basically find करनी है, हमें length find करनी है. So yeah, so we can actually use the height to find that. Let's call the height h. Okay. क्या करा? Yes. Okay. So ये top से start करें.
And what I'm going to do is I'm going to call the height that they're traveling, the height they're going down, I'm going to call that height h. I'm going to represent that by h. Let's say वो bottom पे पहुंच गए हैं दोनों और इतनी उनकी vertical height कम हुई है, ठीक है। एक दफा height हमें मिल जाएगी तो हम फिर length of the hill जो ये है वो तो find कर ही लेंगे trigonometry use करके, तो हम h find कर लेंगे. Now what's the work energy principle that we know about? Work done by the driving force is equal to change in kinetic energy plus the change in potential energy plus the work done against resistance. What's the work done by the driving force here? Driving force का work done कितना है यहाँ पे? 150,000 joules. That's what we've got on the left side, 150,000. Change in kinetic energy. अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना है बस यहाँ पे. टॉप पे 20 थी जब स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट में 20 है, एंड पे आके 30 हो गई है, सो इट्स एन इंक्रीज. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका पॉजिटिव आएगा. हाफ इनटू मास कितना है? 1400 and 500, दैट्स 1900 इन टोटल. फाइनल स्पीड 30 उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 20 उसका स्क्वायर, राइट? हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, right? That's what we're using here. What about the change in potential energy? Potential energy आप देखिए आपकी कम हो रही है. Why? Because you're going down. आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपकी हाइट कम हो रही है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे, ठीक है. आप ये भी कर सकते हो कि इसको पॉजिटिव कर लो फिर एंड पे माइनस एच कर दो, हाइट को आप नेगेटिव ले लो, लेकिन आपने नेगेटिव साइन लगाना है. Why? Because the potential energy is decreasing. आपकी हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा. And then you can see mgh 1900 into gravity into h. What about the work done against resistance? It says there are no resistance forces. That's a 0. We can solve this equation and find the value of h from this. यहाँ से आपके पास height आ जाए, ठीक है. Let's try and solve this. We've got 150,000 on the left side. On the right side, we've got 950 into 30 squared minus 20 squared. And that gives me 475,000 minus 19,000 h. यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 475,000 minus 150,000 divided by 19,000, and that gives me 474. Please correct me if the calculation is wrong anywhere. I am getting 47. Isn't that a very large number? Let's try again. Yeah, so 475,000 minus 150,000 divided by 19,000. Yeah, so this is actually 17.105. Yeah, so I did something wrong there. 17.105. That's what the height is coming out for me. अब वो right angle triangle है, height मेरे पास आ गई है. height कितनी है? 17.105. I can find the length. ये मुझे ये hypotenuse find करना है इस triangle का. What I can do is I can say h over perpendicular over the hypotenuse. Hypotenuse को हम कोई नाम दे देते हैं. Let's call it L, the length of the hill. That equals sine of 5 degrees. Perpendicular hypotenuse क्या होता है? Sine होता है. H की value क्या है? H की value is basically 17.105. And we can find the value of L from there. That's 17.105 divided by sine of 5 degrees. Let's evaluate this and see what that gives us. 17, अच्छा ये आंसर जो आया था मेरे पास उसको डिवाइड कर देते हैं with sine of 5 degrees, and that is 196.3. That's what I'm getting here. 196.3. That's the length of the hill. Unit आप लिखना चाहें लिख दें. It's better. It's going to be meters. That's going to be the length. 196.3 meters. ठीक है, ये length आ गई. Let's move on to the next one.
Now it's given instead. Be careful about the wording here. It's given instead that there is a resistance force. अच्छा, अब जो part A के अंदर चीजें थी ना, उसको आपने consider नहीं करना. This is no longer relevant, right? वो part A के अंदर लिखा हुआ था, वो part B में इसको नहीं use करना अब आपने. It is given instead that there's a resistance force of 100 Newton on the trailer. The length of the hill is 200 meters. Length भी change हो गई है. And the acceleration of the car and the trailer is constant. Now the acceleration is constant. इसने आपको बता दिया कि acceleration constant. So if you want, you can use the constant acceleration formula now. Find the tension in the tow bar between the car and trailer. तो tension find करने के लिए तो आपको forces use करनी ही पड़ेंगी. Let's think about this now. Again, what I'm going to do is I'm going to draw a rough figure. Let me see if I can just copy that here. Okay, so that's what we drew earlier. The speeds, are the speeds relevant? Yes, the speeds are still relevant. The color cover 20, 30, so that's still relevant. Keep that in mind. Okay, वो question की statement में लिखा हुआ है. Part A के अंदर नहीं लिखा हुआ था. Okay. वो still speeds अभी भी relevant है. Height अब relevant नहीं है, वो change हो गई है. But we know the length of the hill now. Length आपके पास total कितनी है? 200. Okay, चलिए वो बाद में लिख लेंगे यहाँ पे. अच्छा, अब हमारे पास क्या है? There is a resistance force of 100 Newton on the trailer. I'm going to just enlarge this figure a bit. ताकि हम forces represent कर सकें वहाँ पे. Okay. There's a resistance of 100 Newton on the trailer. अच्छा देखें कहाँ पे मूव करें. They're moving down the hill. Resistance कहाँ पे लगेगी? इसको अपोज करेगी. ये आपकी इसकी रेजिस्टेंस है. इसकी वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन. ये इसकी रेजिस्टेंस है. कार पे उसने कुछ नहीं बताया हमें रेजिस्टेंस. So that means we can assume there's no resistance there. The length of the hill is 200 meters. And the acceleration of the car and the trailer is constant. Acceleration constant. They find the tension in the tow bar between the car and trailer. अच्छा पहले तो देखें, हमें उसने लेंथ बता दी है पूरी जर्नी की, और हमें फाइनल स्पीड भी पता है, इनिशियल स्पीड भी पता है. हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सेलरेशन तो फाइंड कर सकते हैं वहां से, राइट? So let's do that first. We know the final velocity, we know the initial velocity. So u equals 20, we know v equals 30, and we also know the distance traveled. इस सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक चीज तो फौरन से कर सकते हैं कि हम acceleration find कर सकते हैं. What formula can we use for this? We can use 2as equals v square minus u square. And that's going to give us 2 into a into 200 equals 30 squared minus 20 squared. Okay. यहाँ से a की value आ जाएगी. Let's see what that turns out to be. 30 squared minus 20 squared divided by 400. That is 1.25. So acceleration of the two objects is 1.25 meters per second squared. Acceleration aa gaya हमारे पास. Now what we can do is we can think about the forces acting on the two objects. Okay. ट्रेलर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ट्रेलर पे हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं. एक डाउनवर्ड फोर्स है. That's the weight of the trailer. How much is that? Trailer का mass was 500, so that's 5,000 Newton. एक ये इस पे फोर्स लग रही है. ठीक है. फ्रिक्शन तो नहीं है ना यहाँ पे कोई, तो हमें रिएक्शन फोर्सेस हैं तो सही इसके ऊपर, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ पैरेलल फोर्सेस को देखना है. बाकी परपेंडिकुलर फोर्सेस को इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह नहीं यहाँ पे यूज करना. हमें सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट चाहिए जो सरफेस के पैरेलल है. ठीक है. अच्छा ये 5,000 हो गया. एक तो हमारे पास ये आ गया. सॉरी अबाउट दैट. अच्छा एक तो ये 5,000 आ गया. What about the mass of the car? Mass of the car was 1,400. So the weight of the car is going to be 14,000 Newton. What about their components along the plane? Car के weight का component यहाँ पे क्या लगेगा? Remember weight into sine of the angle. So that's
14,000 into sine of 5 degrees। ये कार का हो गया, वेट का कंपोनेंट जो फॉरवर्ड लग रहा है, ट्रेलर का कंपोनेंट कितना लग रहा होगा लेफ्ट पे? इट्स गोइंग टू बी 5,000 into sine of 5 degrees। ये दोनों के कंपोनेंट्स आगे तो नीचे की तरफ लगे, ठीक है। Do we have any driving force there? Let's have a look at that. The speeds are constant, and at the bottom of the hill, their speed is 30 meters per second. Okay, so we are not really given any driving force there. The driving force का हमारे पास कोई भी नहीं आ रही यहाँ पे। Acceleration is constant, resistance force. Can you spot the driving force anywhere? Am I missing something? अच्छा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कार की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने सिर्फ हमसे ये पूछा है अगर हम इसी को ट्रेलर को यूज कर लें, कैन यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू जस्ट फाइंड इट फ्रॉम देयर। ट्रेलर पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? वी गॉट, या सो ट्रेलर में सिर्फ एक ही अननोन है, सो कार पे हम नहीं लगा सकते, कार की ड्राइविंग फोर्स भी एक होगी, वो हमें उसने बताई नहीं है कितनी है। तो कार पे तो हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स है, वी डोंट नो व्हाट्स दैट। अगर हमें फाइंड करनी होती तो हम वो कर सकते थे शायद, बट वी नॉट आस्क्ड टू फाइंड दैट। टेंशंस क्या होंगी? टेंशन हमारी कार पे जो लग रही है, दैट्स गोइंग टू बी बैकवर्ड्स हियर, दैट इज गोइंग टू बी टी। व्हाट अबाउट द ट्रेलर? ट्रेलर के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? वी गॉट दिस फोर्स दैट इज 5,000 sin 5 degrees, दैट्स वन फोर्स। वी गॉट 100 Newton, that is the resistance force on the trailer, and we also have the tension that is acting in this direction on the trailer. Okay, ये हमारे पास ट्रेलर के ऊपर फोर्सेस आ गई। या सो वी कुड एक्चुअली फाइंड द ड्राइविंग फोर्स हियर एज वेल, वो आप फाइंड कर सकते थे अगर करनी होती, उसने आपसे पूछनी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों के ऊपर, यहाँ पे वैसे एक ही चाहिए, लेकिन जनरली हम क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर हम RF equals MA अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ट्रेलर के ऊपर अप्लाई कर दें, उससे हमें क्या मिलता है? Forward force कौन सी है? We've got tension as the forward force. So what I'm doing is I'm applying the Newton's second law, that's RF equals MA here. Resultant force equals mass into acceleration. Tension is the forward force. We've got this force. We've got 5,000 into sine 5, that is the forward force, plus 5,000 into sine of 5 degrees. We've got a backward force here, that's 100. So we've got minus 100 for that. All of that equals mass of the trailer. What's that? That is 500 into acceleration. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, उसमें हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है ऑलरेडी। हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। 5,000 into sine 5, let's evaluate that. 5,000 into sine of 5, that is giving me 435.78 minus 100 into 500 times 1.25. Evaluate t from there. 500 into 1.25 plus 100 minus the answer, that's giving me 289.2 Newton. This is my tension. ये मुझे फाइंड करनी थी यहाँ पे, टेंशन बिटवीन द कार एंड द ट्रेलर। अगर उसने कहा होता कि आप कार की ड्राइविंग फोर्स भी फाइंड करो, आप वो भी फाइंड कर सकते थे। कैसे? कार के ऊपर भी ये लॉ लगा देते, न्यूटन सेकंड लॉ। उससे क्या होता, कार पे फॉरवर्ड फोर्सेस कौन सी है? यू गॉट 14,000 sin 5 plus the driving force minus the tension, tension आपके पास ऑलरेडी आ गई है, that equals mass of the car, that is 1400 into acceleration. You know the value of the acceleration, you know the value of the tension. आप ड्राइविंग फोर्स वहां से फाइंड कर सकते थे अगर आपको फाइंड करनी होती, ठीक है। उसने ड्राइविंग फोर्स भी यहाँ से पूछी हो सकती थी, वो भी आप फाइंड कर सकते थे कार की। ओके,
All right, so that's this part B of this question. Any problems with this? Is that okay? All right, let's move on to the last question that we want to do now. This was question number 5 from this paper. The last one that we want to do is question number 7 from this paper. Let's do this. Again, it involves some forces, and it was supposedly a question that a lot of candidates found challenging in this paper, according to the examiner report. All right, let's try this. A particle P of mass 0.3 kilograms rests on a rough plane inclined at an angle theta to the horizontal, where sine theta is 7/25. अच्छा, sine theta की value उसने दे दिया हमें. It's a rough plane. Keep that in mind. Mass 0.3 kilograms. वो आपको figure पे भी नजर आ रहा है. A horizontal force of magnitude 4 Newton वो भी figure पे नजर आ रहा है. It's acting in the vertical plane. So you can see all of that there. The particle is on the point of slipping up the plane. Okay, on the point of sliding up the plane. On the point of sliding, इसका क्या मतलब होता है? We've got limiting equilibrium. और limiting equilibrium में क्या होता है? Friction equals mu into r. So we're basically told it's limiting equilibrium. On the point of sliding up, that means limiting equilibrium hai. And since it's about to move up, friction is going to act in this direction. नीचे की तरफ आपकी friction लगेगी. Friction is always parallel to the plane. लेकिन क्योंकि ऊपर मूव करने लगा है वो, फ्रिक्शन आपकी नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी. ठीक है. अच्छा, show that the coefficient of friction between the particle and the plane is 3/4. All you have to do is you have to find out all the forces and resolve them and equate opposite forces. Equilibrium है ना, limiting equilibrium है, लेकिन है तो equilibrium. Opposite forces को equate कर देंगे. Let's figure out all the forces first that are acting on this particle. अच्छा, एक तो ये 4 न्यूटन फोर्स है. इसको ना, क्योंकि राइट साइड पे इस तरह से लग रही है, इसको यहाँ के बजाय हम क्या करते हैं, इसको ना राइट साइड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बिकॉज फोर्स तो असल में इस साइड पे लग रही है, इस तरह से. दिस इज 4 न्यूटन फोर्स. दिस इज वन फोर्स दैट्स एक्टिंग हियर. इसका एंगल दिया हुआ है इसमें, इसका एंगल दिया हुआ है एट एन एंगल थीटा. अच्छा नहीं, एंगल थीटा तो वो था, in the vertical plane, horizontal force. अच्छा ठीक है, उसने बताया horizontal force. So it's given there. It's a horizontal force. So P is horizontal. Okay. So that's good. We're given this is horizontal. If that's horizontal, if it's acting in this direction, and that's 4 Newton, angle कितना होएगा? इसका angle भी यहाँ पे theta आ रहा होएगा. ठीक है. Alternate angles, this angle is this side, and this angle, there are alternate angles, वो angle भी theta आ गया. एक force तो ये उसने बताई हुई है. What other forces are acting on the particle P now? इसका weight है. Weight always acts perpendicular, vertically downwards. 0.3 kilograms is the mass. Weight is going to be 3 Newton. There's going to be reaction. Reaction always acts perpendicular to the surface, so that's the reaction. Are there any other forces? No, that's it. These are all the forces that are acting on the object. Now, there are some forces that are acting parallel to the plane or perpendicular to the plane, friction and reaction. बाकी forces नहीं act करें, पैरेलल या परपेंडिकुलर, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो 4 न्यूटन का रिजॉल्व कर लेते हैं. 4 न्यूटन के कंपोनेंट्स क्या होंगे? 4 का एक कंपोनेंट यहाँ पे राइट साइड पे लग रहा होगा. 4 का एक कंपोनेंट यहाँ पे along the plane आ गया. What is that going to be? 4 cos theta. ठीक है. And one component is going to be perpendicular to the plane in this direction. वहां पे क्या हो जाएगा? एंगल के दूसरी साइड वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे साइन लग जाएगा. So this is going to be 4 sin theta. अच्छा, this is the weight, 3 Newton. What about the components of this weight now? Weight का एक component इसी तरह से plane के perpendicular लग रहा होगा. What is this component going to be? If this is theta, हमें पता है कि ये एंगल भी थीटा होता है फिर. Why? Because this is 90 minus theta. तो ये एंगल कितना बच गया? थीटा. उसके हिसाब से हमारे कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे?
this is going to be 3 cos theta, and along the plane it's going to be 3 sine theta. These are all the forces that we've got now. What I'm going to do is I'm going to mark the forces acting parallel to the plane, along the plane. Kaun se forces hain? We've got 4 cos theta, and we've got 3 sine theta, and we also have friction. These are the forces acting along the surface, parallel to the plane. And then we've got some perpendicular forces, reaction, 3 cos theta and 4 sine theta. अब इसको इस तरह से भी कर सकते हो. This is the force acting towards the right side. This is the force these are the forces acting towards the left side. These are the upward forces. These are downward forces. Right वाली forces को left वाली forces से equate कर दें. Upward forces को downward forces से equate कर दें. And that's all you have to do here. I'm going to write here parallel to surface forces. Yani right, left. And we've got perpendicular to surface forces. Up, down. लेफ्ट पे कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन. और कौन सी लग रही है? 3 sin theta. Their sum should equal 4 cos theta. That's the force acting towards the right side. Upward forces are, downward forces are 4 sin theta and 3 cos theta. ठीक है. अच्छा, अब sin theta को इसने वैल्यू दी हुई है 7/25. Now be careful here. The final result that you need for mu is 3/4. That's an exact value. That's an exact value. ठीक है. अब वो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको जो साइन और कॉस की वैल्यूज यूज करनी है, दे हैव टू बी एग्जैक्ट एज वेल. साइन की वैल्यू तो एग्जैक्ट दी हुई है, साइन से आप कॉस कैसे निकाल सकते हो? यू नीड टू नो दैट मेथड. यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं. साइन थीटा इज 7/25. दैट मीन्स perpendicular over hypotenuse आपको दिया हुआ है. Perpendicular is 7, hypotenuse is 25. What you can do is you can find the base. Base is going to be 25 square minus 7 square. उसका square root. Base से क्या आ जाएगी? It's going to be 24, I think. 24 square, 25 square minus 7 square. इसका square root, that is 24. Base 24 आ गई. That means cos theta, which is base over hypotenuse, that should be 24/25. तो cos की ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यूज इनपुट कर दें यहाँ पे. 4 into 7/25. अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं इनपुट करेंगे, आपके पास एग्जैक्ट ये नंबर नहीं आएगा. ठीक है, सो आपको एग्जैक्ट इनपुट करना है. cos is 24/25. Let's evaluate this. ये r देख लें क्या आ जाता है आपके पास. Then नहीं बेटा, आज पेपर 1 नहीं कर रहे हैं. This is the last question that we're doing for today, and then we're ending today. Today is also an odd night, so we would want to end early. 4 into 7/25 divide plus 3 into 24 divided by 25. That's 4. R की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे. Okay, Farzan, let me do that after this. ये 4 न्यूटन हो गया. अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देते हैं. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन is equal to mu r. Why? Because we're talking about limiting equilibrium. Then we got 3 into sine theta. Sine क्या है? Sine is 7/25. That equals 4 into 24/25. ठीक है. Now mu into 4 plus 21/25 plus 96/25. You can evaluate this, and that's going to give the value of mu. Sorry, equal होना था यहाँ पे दरम्यान में. Yeah, 96 minus 21 divided by 25. That's 3. 3 divided by 4. Yeah, so that gives me 3/4. Mu की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 3/4. That's what we wanted to prove. Mu 3/4. Okay, let's move to the next part. The force acting horizontally is replaced by a force of magnitude 4 Newton acting up the plane parallel to a line of greatest slope. Okay, इसका क्या मतलब है? The force that we've got now, it's acting along the plane. पहले तो 4 Newton horizontal act कर रही है ना. अब जो ये force आई है, that is going to be acting along the plane. ठीक है, it's parallel to a line of greatest slope. कौन सी slope की बात हो रही है? ये जो आपके पास plane की slope है, इसके parallel act कर रही है.
So now for this, what we're going to do is we're going to just draw another figure first and then think about it. ठीक है? So इसके लिए मैं क्या करता हूँ? I can just draw a rough figure here. This is the plane. Okay. The angle is theta. We know that. The particle P is here. And what was given about the particle there? Okay, nothing basically. Okay, ठीक है. So figure के ऊपर और कुछ नहीं draw किया हुआ था. बाकी दोबारा draw कर लेते हैं. Weight of the particle. We know the weight of the particle. Weight is 3 Newton. That's the weight of the particle. There's going to be a reaction force there. 4 Newton जो force पहले लग रही थी उसकी वजह से उसकी बजाय क्या हो गया? There is a force acting 4 Newton parallel to the line. Yeah, so उस 4 Newton की बजाय जो horizontal लग रही थी पहले, अब हमारे पास force इस direction के अंदर आ गई है. This is 4 Newton. अब ये force आ गई है in this direction. ठीक है? We've got to find the acceleration of P. What other forces do we have? उसने friction का कहाँ पे बताया हुआ था? Friction तो ऊपर उसने बताया था कि surface rough है तो friction act कर रही है. Friction किस direction के अंदर act करेगी? We'll have to think about that. So let's think about that in a moment. और क्या force हमारे पास है यहाँ पे? There is no other force. अच्छा. Friction की direction क्या है? ये भी हमें नहीं पता because we don't know whether the particle is going to be moving upwards or downwards. इसके लिए क्या करेंगे हम? पहले weight को resolve कर लेते हैं. Weight को resolve करेंगे तो आप देखें weight का एक component आएगा इस direction के अंदर and that's going to be 3 sin theta. And this component here is going to be 3 cos theta. Why? Because if this angle is theta, we know that this is also theta. ये components आ गए. अब इन दोनों को compare करें. नीचे force A लग रही है, ऊपर 4 लग रहा है. कौन सी force ज्यादा है? 3 into sin theta. Sin की value जो मर्जी डाल दें आप. ये तो छोटी 3 sin theta तो छोटा होएगा. 4 Newton बड़ा है. यानी कि particle ऊपर को move कर रहा है. Particle ऊपर को move कर रहा है. If the particle is moving upwards, that means friction is going to oppose that. And that's going to act in this direction. Friction नीचे पे लग रही होगी यहाँ पे. ठीक है? So it's the same as before, but you need to know why it's downwards. So that's why it's downwards. अब क्या करना है? Acceleration find करनी है. That's pretty straightforward. आप देख लें parallel to surface forces कौन सी हैं? वहाँ पे आप Newton second law लगा देंगे. Why? Because parallel आपकी movement है. Perpendicular to surface वो आपकी forces equal होंगी because perpendicular movement तो कोई भी नहीं है. R की value आपके पास वहाँ से आ जाएगी directly. R की value क्या हो जाएगी? R is going to be 3 cos theta directly. ठीक है? हमने पहले भी यहाँ पे find किया था? नहीं किया था. R is 3 into 24 over 25 and that's going to give us something that is 72 over 25 which is 2.88. R की value आ गई 2.88 Newton. Now we look at horizontal forces, parallel to surface forces. वहाँ पे movement है, आपके objects move कर रहे हैं. Forward force कौन सी है? 4. So I'm using RF equals MA. Resultant force equals mass into acceleration. Forward force is 4. Subtract from that the backward forces, which are F and 3 sin theta. And this should equal mass. Mass is 0.3 into acceleration. Acceleration आपको find करनी है. F is going to be mu r. Sin theta is 7 over 25. That equals 0.3 times A. We know the value of mu now. We found that in the previous part. उसने आपको show करने के लिए कहा था. 4 minus 3 over 4. That was the value of mu there. Into R. R is 2.88. Minus 21 over 25. That equals 0.3 times acceleration. And all of this is going to give you the value of acceleration. You figure out कर लें. 4 minus 3 divided by 4 into 2.88 minus 21 divided by 25 and then divided by 0.3. That's given me 10 over 3, which is 3.33333.
You can write it as 10/3. That's exact. That's going to be fine. या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3.33 at least to 3 significant figures. That's the acceleration that we were looking for. Okay. Let's move to the next. Move to the next part. It says starting with P at rest, the force of 4 Newton parallel to this plane acts for 3 seconds and is then removed. Find the total distance traveled until P comes to instantaneous rest. Now that's interesting. अच्छा, उसने देखें ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है आपकी, ये कब दी थी उसने? बी और सी पार्ट से पहले अलग से दी है. सो नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ पार्ट्स बी एंड सी. बी पार्ट के अंदर नहीं दिया हुआ था, ये बी पार्ट से ऊपर रखा हुआ है. सो दैट्स रेलेवेंट फॉर पार्ट बी एंड इट्स आल्सो रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, फॉर पार्ट सी एज वेल. तो फिगर तो आपके पास अब यही है जो ऊपर हमने बनाई है. Now since P started from rest, तो पहले क्या हो रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड दी है और इसकी एक्सेलरेशन ने फाइंड किया पिछले पार्ट में 3.33 और यू कैन यूज एग्जैक्ट वैल्यू हियर. और हमें पता है टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स. तो 3 सेकेंड्स के लिए जो पहले जब वो फोर्स एक्ट कर रही थी तब के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड. क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज S equals ut plus half at square. That's going to work. U is 0, so that's going to become 0t plus 0 into 3, that's 0 plus half into 10/3 into 3 squared. This is part 1 of the distance traveled. एक part आ गया उसका आपके पास 10/6 into 9. That's 90/9. No, 90/6. That's 15. एक आपके पास ये आ गया distance traveled, that is 15 meters. ठीक है, ये उस part में आया जहां पे आपकी जो एक्सेलरेशन थी वो 3.33 थी. उस पार्ट में आपका ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया. ओके, ये याद है 90/6. That's what I'm getting. Okay, yeah. Find the total distance traveled. अब क्या करना है आपको? आपको करना है कि उसके बाद क्या होता है. अब वो फोर्स रिमूव होगी, उसके बाद 3 सेकेंड्स के बाद वो फोर्स रिमूव होगी. अब जब फोर्स रिमूव होगी, look at this figure again. This force is no longer applicable. R की वैल्यू तो वही रहेगी, परपेंडिकुलर फोर्सेस तो वही हैं, तो R is still 2.88. लेकिन ये न्यूटन्स लॉ जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, सॉरी, ये जब मैं यहाँ पे इस लाइन में अप्लाई किया था, अब इसमें से ये जो 4 फॉरवर्ड फोर्स थी ये खत्म हो गई. तो अब आपकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी. ऑफ कोर्स, व्हाट इज दैट न्यू एक्सेलरेशन? यू गॉट टू फिगर दैट आउट. एक्सेलरेशन पहले फिगर आउट करनी पड़ेगी. अब क्या करें उसके लिए? देखिए सारी वर्किंग यहाँ तक तो वही है, कुछ भी नया नहीं है. इस पॉइंट पे जाके हम क्या करते हैं, 4 को रिमूव कर दें और सिर्फ इतना पार्ट यूज कर लें. ओके, 4 खत्म हुआ है ना, बाकी सब कुछ तो वही है. तो लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन हियर. I've got minus 3/4 into 2.88 minus 21/25. That equals 0.3 times acceleration. यहाँ से मेरे पास acceleration आ जाएगी next part के लिए. वो देख लें क्या आती है. Minus 3/4 into 2.88 minus 21/25 divided by 0.3. It's -10. एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई -10. -10 क्यों? क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ ना, ऊपर को जा रहा था वो, ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर अब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई. ठीक है, दैट्स -10. नाउ वी गॉट टू फाइंड कि इसके बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव फॉर दिस पार्ट, फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी? We know acceleration now, that's -10. We know
द फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आएगा ना, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी एंड पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. डू वी नो द इनिशियल वेलोसिटी? वी डोंट नो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो तो फाइंड करना, टाइम टेकन भी नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड कर लेते हैं पहले, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. वो कैसे करेंगे? जो ये पहले पार्ट में जिस पॉइंट पे जाके वो रुका था, लेकिन पहले उसने 3 सेकंड्स ट्रैवल किया ना, 3 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी वो हम फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास लेफ्ट पे रखे हुए थे, इससे हम फाइंड कर लेते हैं. इससे हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं भाई. v इक्वल्स u प्लस at अगर यूज करें, that's going to give us v equals 0 plus 10/3 times 3 and that is 10. So basically आपकी जो velocity थी first 3 seconds के बाद, वो ये आ गई 10 meters per second. अब ये velocity आपकी यहाँ पे दूसरे part के लिए initial velocity होगी. It's going to be u for this part. That's going to be 10. अब इस पार्ट में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज करके आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. व्हाट डू वी यूज फॉर दिस नाउ? वी यूज 2as equals v square minus u square. That's the equation that connects these four things now. 2 into minus 10 into s equals 0 square minus 10 square, and that's going to give you a value for displacement here as well. Let's see what that turns out to be. 100/20, so that's going to be 5 meters. ये आपका second part में 5 meters आ गया. Total distance कितना हो गया पे? 15 पहले पार्ट में था, फिर आपके पास 5 हो गया. The total distance traveled is 20 meters. That's what we were looking for. All right, so that was this last question from this paper. It was quite long actually for 3 marks, but that's what you had to do here. And that completes this paper as well, in terms of the difficult questions at least. Okay, so that was paper 4 variant 3. इसके हमने 4 questions देख लिए, 1, 4, 5, 7. The rest are pretty straightforward. वो आप कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, Farzan has a question there. Let me just answer that quickly before we end. Question number 4, part B of this 4.1. Question number 4, part B. So ये वाला. Now for this part, we will actually have to do the first part as well. You would just want a hint. Achha, let me just read the question. 2 cyclists, I don't know how to pronounce this name, Isabella and Maria. Isabella and Maria are having a race. They both travel along a straight road with constant acceleration, starting from rest at a point A. So they're both starting from the same point. So let's say that point is A here. उससे start करें. Now, Isabella accelerates for 5 seconds at a constant rate, a meters per second square. She then travels with the constant speed she has reached for 10 seconds before decelerating to rest at a constant rate over a period of 5 seconds. Now, it often helps to visualize such situations using graphs. आप इसको थोड़ा सा visualize कर लेंगे ना, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. So we're talking about constant acceleration here. तो अगर आप इसका velocity time graph को सोचें, how is that going to look like? Basically इस तरह से हो रहा है कुछ कि वो पहले constant acceleration पे increase कर रही है. ठीक है, 5 seconds के लिए 0 से start किया, 5 seconds में इतनी होगी velocity. ये velocity का ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. उसके बाद क्या वो constant speed पे चलना शुरू हो गई. कितनी देर के लिए? for 10 seconds, यानी कि 5 से लेकर 15 seconds तक constant acceleration पे. And then she decelerates at a constant rate for a period of 5 seconds. दोबारा 5 seconds पे constant rate पे वो वापस 0 पर आ गई. तो इसका मतलब ये देखें, 5 seconds में उसने 0 से start किया था, 5 और इस velocity पे पहुंची थी, whatever this velocity is. और 5 seconds में उसने decelerate किया है. तो basically acceleration की और इस deceleration की value same होगी. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू सेम होगी. ठीक है. अच्छा, एक तो ये समझ आ गई हमें. दूसरा क्या है,
Maria accelerates at a constant rate, reaching a speed of 5 meters per second and a distance of 27.5 meters. So वो accelerate कर रही है constant rate के ऊपर, constant rate के ऊपर 5 meters per second पे पहुंचती है, distance इतना है. She then maintains the speed for a period of 10 seconds before decelerating the rest of the constant rate over a period of 5 seconds. So it's again going to be exactly the same shape of the graph. It's given that A equals 1.1, find which cyclist travels further. This place is pretty straightforward. आपने दोनों के distances find कर लेने, total distances. आप area under the graph use कर सकते हो if you want. आपको values पता है दोनों की. This is 1.1 now. और दूसरा ग्राफ भी ऐसा होएगा. या आप constant acceleration formula use करना चाहें वो भी कर सकते हैं. उसको break करके multiple parts में. So the first part is pretty straightforward. That's doable. आप graph से कर लें, दूसरे का भी ग्राफ बना लें, exactly same shape होएगी और area under graph find कर लें दोनों के. तो मुझे आप आंसर्स बता रहे हैं वो क्या आते हैं? Question 4 of this paper or the other paper? 4.1 या 4.3 की बात कर रहे हैं? कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? उसका तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था, है ना? Let me just check. इसको क्वेश्चन नंबर 4 हमने, yeah, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया. So yeah, so let's maybe you're talking about this as well. अच्छा, ये आपने कर लिया. इसका आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई. क्या आ गई? 82.5 आप बता रहे हैं मुझे. मारिया ने कितना ट्रैवल किया? 82.5. No, Maria traveled 90 and Isabella traveled 82.5. Okay, I'll get back to that. Your name is not coming here on Zoom. ABC physics. I'm not sure who you are. Is it Uzair? Okay. Daniel, अच्छा ठीक है. Isabella ने कितना ट्रैवल किया? 82.5. ये आपके पास first part के आंसर आ गए. Let's look at part B. Now since find the value of A for which the two cyclists travel the same distance. Okay. अब देखिए मारिया की तो उसने सारी वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे. तो मारिया का डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. उसके तो एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई हैं सारी. तो मारिया का डिस्टेंस ट्रैवल तो अभी भी 90 है, राइट? वो तो अभी भी 90 है. इजाबेला का डिस्टेंस ट्रैवल डिपेंड करता है इस वैल्यू ऑफ ए के ऊपर कि ए की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. What we can do is we have made this rough sketch here on the side. हम इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है उसको इक्वेट कर देंगे 90 के साथ, and that's going to give us the value of A. Now let's see how we can do that. We know that the acceleration is A. इसका मतलब ये हुआ कि gradient जो है आपका इस part का, that is A. Right? Yeah. So gradient इस part का कितना है? A है. Let's call this point something. हम basically V find करना है. V आ जाएगा तो फिर हम ये पूरा distance travel निकाल लेंगे. V कैसे आएगा? What's this point? This point is 5 and V. So for the second part, we basically know. For the second part now, we know okay, acceleration is final velocity, which is V, minus initial velocity. Yeah, points gradient find करना. Acceleration is gradient of this part of the graph. V minus 0 divided by 5 minus 0. V over 5 equals 5 है. तो V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू basically 5 times A. ठीक है. V की वैल्यू आ गई आपके पास. Now, what you can do is you can find the area under the graph and equate that to 90. It's a trapezium. Trapezium का formula लगा दें इसके ऊपर. Half into sum of parallel sides, that's 20 and 10, into the height. Height is V. V is basically 5 times A. That equals 90. You get the value of A from this. ठीक है, evaluate कर लें, देख लें क्या आता है. 180
divided by 5 divided by 30, that gives me 1.2. So it should be 1.2 meters per second square if the distance traveled has to be the same. Does that make sense? ठीक है?